with syllabus. Yes. So this exercise is really time taking because before that I didn't focus on it. So right now I have to focus much more in. Like how you are doing now? Like you are reading the topic. You are reading the previous question papers and trying to make a list of the Yes, topics, right? So, yeah. yes, sir. Fine. So no problem. Actually, you wanted to have the list of the book, right? Yes, sir. Okay. Sir, I have a UPSC syllabus with me. No problem. So what I'll do now, I will give you the list of sources rather than saying it as a list of book. I will give you the list of sources from which you need to read it, like topic wise topic, like which topic you need to read it from which Yes, book. That's what we will do. So when you're preparing, as I told you, right, you need to understand the recent trend of the exam, and in the recent trend, you need to understand the recent sources as well. The topic is same, but the sources from which the UPSC used to ask question 5 years back is different, and the question from where they're asking the question recently in the last 2 to 3 years is also different. Like earlier, they used to ask questions from other materials. Nowadays, they're asking from other materials. So whatever the list of the sources which I will be giving to you, that will be as per the recent trend of the exam, right? So there is some different list of books. There is a different list of sources for the prelims, and there is different source of the list for the मेंस एग्जाम. मेंस एग्जाम के लिए अलग एक बुक लिस्ट है, अलग एक सोर्स की लिस्ट है, और प्रीलिम्स के लिए अलग है. So we will start with prelims first, like subject wise. So first topic in GS paper 1 in prelims. Prelims का पहला जो topic है, that is that is current international affairs के बारे में होगा शायद वो, that is current affairs, right? Current affairs का हम बाद में देखते हैं what you need to do. Second topic जो Indian polity. तो for Indian polity what you need to read for prelims point of view, सबसे important चीज है first read 11th standard NCERT, that is Indian Constitution at work. This is must, you need to read it, and you need to read this book at least 4 to 5 times. कितने बार इसको पढ़ना है? In the last 4 to 5 years, some of the questions which are very conceptual questions, like what is the meaning of liberty, what is the meaning of equality, what is the meaning of parliamentary democracy, what is the meaning of difference between freedom and liberty. इस तरीके के कुछ conceptual questions पूछे जा रहे हैं, and this is directly being asked on this book, right? From 11th standard NCERT. The name of the book is Indian Constitution at Work. Then second, one more book that is for political science. NCERT है, political science NCERT है. There are two books of political sciences, 11th and 12th. तो अगर आपके पास में वक्त है तो you can read that 11th and 12th standard political science. Okay, sir. ठीक है? Then you have to follow जागरण जोश website. एक website है जागरण जोश की. The name of that website is called Jagran Josh, and in that Jagran Josh website, they have given a very good, the information about the various constitutional posts, various, the constitutional bodies, then provisions related to the fundamental right, DPSP, preamble. इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से उन्होंने information दिया हुआ है. So you can follow Jagran Josh. So these three things are sufficient for prelims point of view. Okay. This is Sir, sufficient for you prelims. told about yes, sir. One more thing, sir. You told about 12th NCRT. The name of the NCRT is Political Political Theory. science. 11th and 12th standard political science in here. Okay, okay. 4 books in total. Yes, one is Indian Constitution at Work, which is the 11th standard NCERT. Second is political science NCERT, which is there for both 11th and 12th. Okay, 3 books. okay, okay. Then Got it. Jagran Josh. Just refer Jagran. Nowadays, UPSC is not asking more questions from Lakshmikant. You know what is happening? Everybody in the Delhi or everybody in the coaching institute, they are asking people to follow Lakshmikant. So what UPSC is doing now, deliberately UPSC is not asking questions directly from Lakshmikant. Clear? Which UPSC used to do 5 years back. 5 साल पहले UPSC used to ask many questions directly from Lakshmikant. Now UPSC is not asking questions from that. So these are the 4 sources from which in last 2 to 3 years UPSC is asking the question. Clear? Quality. Second, geography.
Geography, read India physical environment, that is for geography of India, 11th standard NCERT. 11th standard NCERT है, the name of that NCERT is called India physical environment. Second, fundamentals in physical geography. Then third is GC Leong. There is one book of GC Leong called practical book in physical and human geography. Right? अगर आपके पास में ये किताबें नहीं है, I am giving you the list of the books. If you don't have these books, I will provide the soft copies of all these books. Just let me know. I'm just giving you the list of the book now. I will be also giving you the soft copies of these books. Like geography के लिए इतना sufficient है. उसके अलावा for geography map reading. For prelims, you need to read the map. You can do it from Google. Google Map से आप कर सकते हो. लेकिन कुछ एरियाज है वहां का ही आपको मैप रीडिंग करना है. एक तो क्या है, the West Asia का मैप, like Mediterranean Sea, Central Asia, then उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, ईस्ट चाइना सी, जापान, ये एरिया ज्यादा डिटेल में आपको देखना. मैप रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दैट यू नीड टू डू बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम. Clear? Now third, history. For history, you need to read Tamil Nadu State Board book for ancient and medieval India. Tamil Nadu State Board book for ancient and medieval India. For modern Indian history, you need to read Spectrum publication book. Spectrum publication, A Brief History of Modern India. Okay, sir. Sir, Tamil Nadu of which class? Tamil Nadu, I think ancient India is for 11th standard and medieval India is for 12th standard. Okay, sir. Got it. I'll share this as well to you. I will be sharing the soft copy of this. If you're not comfortable with this, take a printout. If you're not comfortable in reading the soft copies, otherwise, because अब सारे के soft printout अगर निकालने जाओगे, it will cost you more than around 4 to 5 hours. Yes, there are certain the books which you need to read it again and again. That you can take a hard copy, you can print out. But कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि just you need to read it once and twice. तो वो आपको उसके हार्ड कॉपीज आपको लेने पड़ेंगे. सॉफ्ट कॉपीज में आप उसको पढ़ सकते हैं. राइट? दिस इज हिस्ट्री. नाउ इकोनॉमी. फॉर इकोनॉमी, माय क्लास नोट्स, आई विल बी शेयरिंग यू हैंड रिटन क्लास नोट्स. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप वो क्लास नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. दैट क्लास नोट इज हैविंग द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स. व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू रीड दैट क्लास नोट्स अलोंग विद माय रीडिंग. जो मैं along with my class, along with my recordings, जो मैंने बेसिक इकोनॉमी के जो क्लासेस किए हैं उसके रिकॉर्डिंग का एक्सेस आई विल गिव इट टू यू. यू हैव टू रीड दैट नोट्स along with my recording. इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है, if you read any book, बहुत सारे किताबें भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं बताया. तो my class notes, then my recordings of the class, that is sufficient for prelims. Then newspaper. Write it down. Newspaper is important. Newspaper में क्या करना है? You have to make a list of the terms which are coming in the newspaper with respect to various economic topics. जो basic economic topics आप पढ़ रहे हो ना, GDP, GNP, inflation, balance of payment, foreign exchange reserve, banking system, financial sector, international organization, these are the basic topics of economics. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई टर्म न्यूज़पेपर में नया टर्म अगर आ रहा है तो वो टर्म को आपको लिस्ट निकालना है और उसके बारे में बेसिक पढ़ाई करना है. गॉट इट? तो करंट अफेयर्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑन करंट इकोनॉमी. जैसे मैंने आपको पॉलिटी बताया, ज्योग्राफी बताया और हिस्ट्री बताया, दीज आर द स्टैटिक सब्जेक्ट. नो, वेरी लेस करंट अफेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, बट मैक्सिमम करंट अफेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन इकोनॉमी. Then second is science and technology. Write it out. What you need to do for science and technology? Don't read any basic books for science and technology. Don't read any NCERT. Don't read anything. Just follow the current affairs of science and technology. उसमें क्या करना है? Science and technology में IT से related
telecom से related telecom technology, information technology, cyber technology, then biotechnology, nanotechnology, space technology, then defense technology, then recent the smart watches, recent gadgets which we are using in our day to day life. सो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में नए नए टर्म्स आ रहे हैं वो आपको देखना है, जैसे कि नए if there is any new the material which is in the news, harmful material as well as useful material. So science and technology, I will be giving you the list of the topics which you need to revise for science and technology. So don't waste your time in reading basic books. Like if you read the basic science, you have to read the physics, biology, chemistry. It will take at least 4 to 5 months to read the basics, and there will be only one or two questions which will be asked from that basic science. So UPSC is not asking question on core science. They are asking questions on application of science and their use in day to day life. जो हमारे एवरीडे लाइफ में साइंस का जो एप्लीकेशन हो रहा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. So do the science and technology from the list of the topics which I will provide. Clear? Check. So these are the reference which you need to use for prelims exam. So what about environment? Environment, yes, you can refer 11th standard NCERT environment, or you can refer Shriram IAS environmental studies book. Shriram IAS basic environment and ecology and ecosystem की जो किताब है आप उसको रेफर कर सकते हैं for basic. Then current affairs of environment again from newspaper. Current affairs of environment newspaper. 11th class NCERT for environment plus Sri Ram IS environment notes. Yes. Which is available on the Google. Google पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. Okay, sir. Okay, sir. And sir, people say about the 4 chapters of 12th ecology, class 12. See, Sri Ram IAS notes जो हैं, that notes is actually derived from that NCERT. जो Sri Ram IAS ने जो notes बनाए हुए हैं उन्होंने वो NCERT पर रेफर करके ही बनाया हुआ है. So when you are reading Sri Ram IAS notes, you don't need to read it again because whatever is there in Sri Ram IAS, the same thing is there in NCERT. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. What about the governance part? Polity जो मैंने आपको बताया ना, polity में ही है वो, that is included in polity only. You have to read it from जागरण जोश जो मैंने आपको बताया ना, जागरण जोश में जो वेबसाइट है उसमें गवर्नेंस वाले भी टॉपिक हैं. You can read it from that. Sir, no need to read Lakshmikant. अगर आपने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक बार तो आपने कम से कम पढ़ा है ना एनसीईआरटी, सॉरी लक्ष्मीकांत, ठीक है, एक बार पढ़ना सफिशिएंट है, बट अभी नो नीड ऑफ दैट. ठीक है, ठीक है. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेंस. व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? सॉरी, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही करना है. यू हैव टू डू इट फ्रॉम न्यूज़पेपर ओनली न्यूज़पेपर. यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली. Now don't rely on any current affair magazines which are available in the market, because वो current affair magazine जो होते हैं, that is of 100 and 150 pages every month. So you have to read around 1200 to 1500 pages, and out of that 1200 to 1500 page, you will get only one or two questions from that 1200 to 1500 page current affair magazines. और वो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तो आप एग्जाम हॉल में वो सॉल्व कर सकते हैं. If you are reading newspaper regularly by yourself, see, reading newspaper is very very important. अगर आपने टॉपर के अगर आपने इंटरव्यू देखे हैं, like even you are referring to which IAS officer where had a discussion, what is her name? Isha Mathur. Yes, she must have also told you that you should read newspaper by yourself regularly. You should revise that newspaper revision, previous year question paper, and understanding the syllabus. These are the 4 things, right? What we do rest of all the, हम बाकी के सारी चीजें करते हैं, but we don't see the previous question paper regularly. We don't see the syllabus again and again. We don't read newspaper by ourselves because हमें ना रेडीमेड की आदत होती है. हम न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ते हैं because खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग होता है, या खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने में समय चला जाता है, तो हम पढ़ते नहीं. लेकिन you have to read newspaper by yourself. You have to make your own the current affair notes. How to make current affair notes
उसके लिए I will take a separate session to you. कैसे करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं I will discuss with you later on. But the best source for current affairs is reading newspaper by yourself. But sir, which newspaper? Indian Express. Indian Express for the whole cycle, pre-mains, Yes, yes, interview? yes. Both for prelims as well as mains. Okay, got it. Reading newspaper is very, very important for mains as well as prelims. Okay, sir. Okay, sir. And nothing left for pre. Yes, this much is sufficient. अभी देखिए, अब इससे ज्यादा मत पढ़ो. जो भी मैंने सोर्सेस आपको बताए हैं, all these sources you need to read at least 2 or 3 times. You have to revise it again and again. Yes, sir. Yes, sir. And sir, one last question. Yes. For geography, only 11th NCERT plus GC long. No need to go with 12th NCERT. For geography, no. 11th standard, India, physical environment, and then fundamentals of physical geography. That is sufficient. And GC 11 along with that. Okay, got it, sir. Plus mapping and West Asia plus Southeast Asia. Map of India and map of world. How to do the map of the world, how to do the map of India, that I will explain to you later. Fine? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So prelims is finished. Yes. Now let's move on to the mains. Can you see the main syllabus on your screen now? Is it? Sir, Hello? it's loading. It's loading, sir. Okay. Is it visible now? Not yet, sir. It's still loading. Yes, sir. It's visible. It's visible now. Okay, fine. So I will give you topic-wise sources of syllabus. Right? Yes. For GS paper 1, GS paper 2, and GS paper. First topic, India, culture and silent aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times. So refer my class notes. Write it down. Class notes. I will provide you a class notes for this. Yes, sir. One more thing you need to remember, Nikita, here that how to use these notes while writing the answer. That is most important. Like आपको आंसर लिखने में ये इस नोट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, that I'll explain. First you can refer this. For revision you will refer this. Second topic, modern Indian history from about middle of the 18th century until the present, significant event, personalities and issues, Grover and Grover. Second topic, you have syllabus with you? Yes, sir. I have. Yes, so write down Grover and Grover. Do you know there is one book called Grover and Grover? Modern Indian history book? No, sir. I heard first time. Okay, check it. I'll share you the software. Almost all the questions are directly picked from this book for mains. Okay. Second, the freedom struggle. Its various stages, important contributors. You can either refer Bipin Chandra's book, that is Struggle for Independence, or you can refer the same Grover and Grover. Got it, sir. Second, third, post-independent consolidation and reorganization within the country. 11th standard NCERT, that is politics since independence in India. Got it, sir. जो मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको बताया था, 11th standard political science की किताब जो मैंने आपको बताया था ना, same book how to use for here also. Then Bipin Chandra's book, that is India since independence. Okay, okay. And one more thing you need to remember, Nikita, कि जब भी आप कोई किताब पढ़ोगे ना, तो how to read that book? Yes, sir. That also I need to tell you. Like you don't need to read each and everything of this book. जो मैंने आपको किताब बताया ना, ये कौन सी किताब है? This is India since independence. We don't need to read each and everything from that book. You just need to read the relevant part of that book which is there in the syllabus. So syllabus में ये post independent consolidation है, reorganization within the country, यही part आपको वहाँ से पढ़ना है. Even in Grover and Grover, you don't need to read each and every the chapter of the Grover and Grover. इसमें से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है, that also explain to you. Like
Whenever you start anything, just let me know. I will let you know that which chapter needs to be read, and what should be your approach while reading that book. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I want to ask something. Whatever source I read, for any subject, so नो, do I need to फॉर learn that प्रीलिम्स जो first? है ना, जो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बुक लिस्ट बताई है वो आपको पूरा पढ़ना है. You have to read each and Okay. every part, whatever the sources are told you for prelims. But for mains, for mains you need to be very selected and you need to prepare to the point. आप Okay, as per the syllabus. यस, एज पर द सिलेबस. Okay. और आप नोट्स भी ऐसे ही बनाओगे. जब आप किताब पढ़ोगे ना, किताब में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी. आपके जब नोट्स रहेंगे ना, वो एज पर द सिलेबस ही होना चाहिए. जैसे आपके नोट्स कैसे होंगे? वेरियस स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. आपका पहला नोट्स कैसे होगा? Okay. व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. सेकंड नोट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट. इन दिस वे वी हैव टू मेक द नोट्स. हु आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स. उसके बाद में Yes. पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन. पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन में देयर इज अ टेरिटोरियल कंसोलिडेशन, देयर इज अ सोशल कंसोलिडेशन. टेरिटोरियल कंसोलिडेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया. सोशल कंसोलिडेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया. तो उन्होंने कैसे किया? कंसोलिडेशन कैसे किया? रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया? दैट्स व्हाट यू नीड टू क्लियर. Yes, sir. Got it. नेक्स्ट है history of the world, which will include the events from 1860 such as industrial revolution. This you have to do it from IGNO. इग्नो के नोट्स होते हैं, इग्नो नोट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. Yes, sir. अब ये इग्नो के जो नोट्स हैं, अगेन देयर आर वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ द इग्नो नोट्स. सॉफ्ट कॉपीज आर अवेलेबल. अगेन यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट इग्नो नोट्स. यू जस्ट नीड टू रीड दिस टॉपिक्स ओनली. इग्नो नोट्स से सिर्फ आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला ही टॉपिक पढ़ोगे. इग्नो नोट्स से आप सिर्फ वर्ल्ड वॉर वाला ही टॉपिक पढ़ोगे. नेशनलिज्म के टॉपिक पढ़ोगे, कोलोनाइजेशन का टॉपिक पढ़ोगे, डीकोलोनाइजेशन. ओनली यू विल रीड दीस टॉपिक्स ओनली फ्रॉम इग्नो मटेरियल. यू विल नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द इग्नो. Yes, sir. समझ में आ Got रहा it, है? sir. ओनली दैट टॉपिक यू विल रीड इट फ्रॉम दैट, फ्रॉम इग्नो वर्ल्ड हिस्ट्री इग्नो नोट्स. दीज आर अवेलेबल, सॉफ्ट कॉपीज आर अवेलेबल ऑन द इन द इंटरनेट. अगर आपको चाहिए तो इवन आई एम हैविंग द सॉफ्ट कॉपीज ऑल दिस थिंग्स. आई विल प्रोवाइड इट टू Yes. यू. हाउ टू रीड दैट आल्सो I'll explain. How to read it and how to write the answer, that also I'll explain. And if possible, watch my recordings. So write down क्लास रिकॉर्डिंग. मेरे जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास रिकॉर्डिंग है, देयर आर आई थिंक अराउंड 15 to 16 recordings are available on Wise app that you can record. Clear? Yes. Okay, next is talent features of Indian society and diversity of India. 11th standard and 12th standard sociology and Got it, sir. ठीक है. Then I forgot one of the book is there. I don't able to recall that name of the book. But that is one reference book. I will share it with you later on. मतलब ये दो चीजें आपको करना है. 11th standard sociology. ठीक है. ठीक है. Role of women and women's organization, population and association, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. So role of women and women's organization, you have to do it from Bipin Chandra's book. That is post independent इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो है वो आपको करना है. But this book, that is the role of women and women's organization, this book talks about the women and women's organization's role since independence till 2000. लेकिन उसके बाद वाले पीरियड में जो इंडिया में अलग अलग वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो रोल प्ले किया है, दैट यू विल कम टू नो फ्रॉम न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में बहुत बार ऐसे होता है ना कि कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, कैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल आते हैं. रिसेंटली देयर वाज वन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस बाय इला भट्ट. देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेवा, SEW सेवा का एक आर्टिकल आया था जिसमें how the सेवा ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन ये आते हैं. देन जब भी कोई वुमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं इंडिया में, उस समय में देयर आर सो मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, दे कम फॉरवर्ड to address the issues of the women, like in Sabrimala case,
or the Yes. entry of the women. Like there were many women organizations which came in forward during the triple talaq cases. Yes, sir. Yes. So maximum part you have to do it from newspaper. ये current affair वाला part. Okay, sir. Population and associated issues. उसके notes हैं that I will given to you. It's a very simple topic. Population and इसके associated issues क्या है? That you can do it from human geography or you can do it by yourself. Google में भी search करके देखोगे ना कि what are the issues associated with the population, like unemployment, stress on the environment, stress on the material resources वगैरह. It's a very simple topic जो आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा कि population associated problems क्या है. लेकिन अभी ये पॉपुलेशन एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए फिलहाल गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको पता होना चाहिए, राइट? क्यों रिसेंटली वी हैव सीन दैट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, देन एनसीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. ये सारे जो करंट में जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना उसको लिंक करना है. सिंपल टॉपिक है, राइट? हाउ वी आर ट्राइंग टू यूज अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, कैसे हम हमारे पॉपुलेशन हो उससे एसोसिएटेड क्या. और इश्यू सेक्स रेशियो वाला इश्यू है इंडिया में. सेक्स रेशियो बढ़ता जा रहा है, सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है. दीज आर द इश्यूज पॉपुलेशन. इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक. यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी मटेरियल. आप गूगल में भी सिंपली सर्च करोगे ना कि व्हाट आर द पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज इन इंडिया, यू विल गेट सो मेनी आर्टिकल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज. Poverty issues and developmental issues, you can do it from Economic Survey of India, because every year Economic Survey has a dedicated chapter that what government is doing to address the poverty and development in India. हर साल Economic Survey of India में एक अलग चैप्टर होता है उसमें कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है poverty को रिड्यूस करने के लिए, डेवलपमेंटल इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए. Economic Survey of India और 12th 5-year plan document और नीति आयोग वेबसाइट. Economic Survey, Niti Aayog, and 12th 5-year plan document. yes, Now sir. again these three are which ये बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है. आपको उसमें से पढ़कर कुछ पॉइंट वाइज नोट्स आपको बनाने हैं. यू हैव टू मेक योर ओन बुलेट पॉइंट सो दैट रिवीजन करने के लिए आपको ये आसानी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सेकेंड, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज. बेसिक नोट्स, बेसिक क्लास नोट्स आपसे करना है. देन इंडियन एक्सप्रेस में देयर इज वन पर्सन हु ऑलवेज राइट्स ऑन द इश्यूज ऑफ अर्बनाइजेशन, दैट इज ईशर जज अहलूवालिया. ईशर जज अहलूवालिया के बहुत सारे आर्टिकल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में. तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में सर्च करना है ईशर जज अहलूवालिया इंडियन एक्सप्रेस. So there are around 15 to 16 articles written by Ishar Judge Ahluwalia on urbanization. Simple topic है ये. क्या टॉपिक है देखो, urbanization. Do you know what is urbanization? Yes, sir. Yes, what is urbanization? Basically, urbanization, people are moving from rural area to urban area, and for their livelihood purposes, and so many things, sir. So you are telling me the cause of urbanization, like when people migrate from rural area to urban area, that's what you say that कि वो cause बता रहा है. I'm asking what is urbanization. What are urban area मतलब क्या पता है? What is urban area? What is the difference between urban area and rural area? Sir, basically, few parameters of urban and rural areas are populations, कि कितनी कितनी होती है, उसके बेसिस पे हम इनको फिक्स करते हैं, है ना. और जो यहाँ का अपना सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बेसिस पे भी हम इनको डिवाइड करते हैं, लाइक म्युनिसिपल सिस्टम. और वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर जो सिस्टम चलता है रूरल एरियाज में, इस तरह से मेयर सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें. ठीक है. तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में बेसिक डिफरेंस ये है इन अर्बन एरिया मैक्सिमम पॉपुलेशन इज वर्किंग इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज.
Urban areas are those areas where more than 75% population is engaged in non-agricultural activities. And rural areas are those areas where more than 75% or maximum majority of the population is engaged in, agricultural activities. This is the actual, the technical definition of urban area and rural area. So क्या होता है कि why people To the migrate point. from rural area to urban area? When people migrate from urban area to rural area, because like in urban area, people are engaged in services, they are engaged in manufacturing, they are engaged in non-agricultural activities, trading, services, manufacturing, political activity. That is why that is urban area, right? तो ये अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसकी कुछ प्रॉब्लम है. देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन है, no drinking water is not available, housing is a major problem in urban areas, transportation is a major problem in urban areas, air quality index is not very good in urban areas, क्राइम रेट वहां पे ज्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कुछ दिनों से अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेयर टू रूरल एरिया अर्बन एरिया में बढ़ रहा है. So the process of urbanization means, when people shift from agricultural activity to non-agricultural activity, that is what is process of urbanization. और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं. प्रॉब्लम क्या होते हैं? Like when people shift their profession from non-agricultural activity to non-agricultural activity, like when people migrate from rural area to urban area, फिर उन्हें वहां पर रहने के लिए जगह नहीं होती है, पॉपुलेशन वहां पर बढ़ता है, तो फिर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होते हैं, फिर वहां के रिसोर्सेज पे स्ट्रेस आता है. वेस्ट मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, water management is a problem, right? Drainage management is a problem. These are certain issues in the urban areas. So what are the problems of urban areas and what are the remedies? उसके remedies क्या है, आप कैसे कर सकते? और you live in Delhi, so you have to have a personal experience, like what are the problems of living in a city like Delhi. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ड्रेनेज मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, क्राइम रेट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, हाउसिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो इसके लिए क्या सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम के लिए रेमेडीज क्या है, सोर्स क्या होगा? न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स. जस्ट नीड टू रीड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर. मतलब व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एड्रेसिंग दिस. न्यूज़पेपर, इवन यू कैन टेक इट फ्रॉम 12th 5-year प्लान में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now next is effects of globalization on Indian society. Sir, is it 5-year plan you told now? 12th 5-year plan. 12th 5-year plan. 12th 5-year plan for poverty and developmental issues. Okay, sir. Got it. Urbanization and their problems. Ishwar just Lohwalia's article in the Indian Express. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Effects of globalization on Indian society. Yes, sir. Effects of globalization on Indian society in newspaper plus internet. Okay. Simply आप गूगल में सर्च करो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यू विल गेट सो मेनी आर्टिकल्स. उसमें से 4-5 आर्टिकल आपको पढ़कर रखना है कि इंडिया के सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे है. व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज फैमिली सिस्टम, इंडियाज मैरिज सिस्टम, इंडियाज द रिलीजन, इंडिया के जो भी सोसाइटी के जो फीचर है ना, इंडिया का रिलीजन है, इंडिया का जो फैमिली सिस्टम है, इंडिया का यू कैन से हमारे फूड हैबिट्स, हमारे क्लोथिंग हैबिट्स, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, सारी चीजों पे, हमारी मेंटालिटी पे कैसे इसका ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हुआ है, ये आपको देखना है. What you don't know? Nowadays, families are becoming more and more nuclear. Earlier, India में, there was, the joint families. Now, Yes. we are shifting towards nuclear families, right? Earlier, we used to have, normal food, but now we are having pizza, we are having, the Western food. Right? Majority of, like, so, सबसे पहले चीज तो आपको क्या करना है? First, you need to know what are the features of Indian society. Features of Indian society में, joint family system, caste system, women biasness, women are not allowed,
ये इंडिया के सोसाइटी के फीचर्स हैं, और ये इस इंडिया के सोसाइटी के फीचर्स पे ग्लोबलाइजेशन, देयर आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right? And forward also. You can see the best Solution. example recently जो दिल्ली में जो इशू चल रहा है ना, that आफ्ताब and that ये जो relationship, live in relationship, Yes, this sir. is the concept which is introduction in India as a result of globalization. तो उससे Yes, आगे sir. फिर इंडिया के सोसाइटी पे क्या असर होगा? Yes, there are some Yes, sir. positives and there are some negatives. But live in Yes, relationship जो इंडिया के सोसाइटी में जो आ गया, it is not necessarily that it is always having a negative impact. It is having some positive yes, impact, sir. but it is also having some negative impact as well. So you need to know what are the positive effects and what are the negative effects. Clear? समझ में आ गया? It's a very simple Yes, topic. sir. Second, social empowerment, communalism, regionalism, secularism. ये communalism, regionalism और secularism जो topic है, you have to read from बिपिन चंद्रा's book, जो मैंने आपको बताया था ना, India since independence. India since Yes, sir. independence. Then newspaper. Newspaper में many experts writes articles on this issue of communalism, regionalism, secularism. इस topic पे newspaper में बहुत सारे अलग-अलग इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आते हैं, अलग-अलग एक्सपर्ट. जब ये इश्यू होता है इंडिया में, जब कम्युनलिज्म बढ़ता है, या इंडिया में जब रीजनलिज्म बढ़ता है, या इंडिया में जब सेक्युलरिज्म को लेकर डिबेट होता है, तो कुछ लोग उससे लेकर आर्टिकल लिखते हैं, तो वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल रेफर करते हैं. जो बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो टिल 2000-2005 तक है उसमें, लेकिन उसके बाद में इंडिया में कम्युनलिज्म कैसे बढ़ रहा है, रीजनलिज्म कैसे बढ़ रहा है, सेक्युलरिज्म कैसे बढ़ रहा है, दैट यू विल गेट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर. Social empowerment also. नहीं, सोशल एम्पावरमेंट, ये जो है सोशल एम्पावरमेंट, अगेन दैट वी हैव टू डू इट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड 12th फाइबर में. Okay. सोशल वेलफेयर नाम का एक टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में. देयर इज वन सेपरेट चैप्टर कॉल्ड सोशल वेलफेयर. Yes, sir. Got it. ठीक है. नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, देसी लिया, which you have used it for prelims as well. Got it, sir. Right? Silent features of world physical geography, JC Leong and class. I will be sharing you the notes. There are certain basic notes. Just need to read them. Class notes. ठीक है. Distribution of key natural resources across the world, class notes. And newspaper. Basic आप क्लासरूम से करोगे, लेकिन there are certain issues going on related to the various resources. जैसे कि अभी इस साल क्रूड ऑयल, Yes, sir. Crude oil. Yes, sir. क्रूड ऑयल को लेकर बहुत इश्यू चल रहे हैं, राइट. हर साल कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको इश्यूज जो होते हैं, इश्यूज यू विल गेट इट फ्रॉम बेसिक, यू विल गेट इट फ्रॉम बेस क्लास नोट्स, इश्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर, इश्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर. Okay. Okay. Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclonic topic, class notes. Yes, sir. NCERT 11th standard NCERT जो मैंने आपको बताया था, fundamentals of physical geography. That's what you need to do. Okay. This for GS paper 1. Got it, sir. Fine. ठीक है. आप ये सारे जो है ना आपको एक बार पढ़ना है, लेकिन आंसर राइटिंग जब आप करोगे, one thing you need to remember, like when you are writing answer for GS paper 1, you need to have a social angle, historical angle and geographical angle while writing answer. कोई भी टॉपिक का जब आप आंसर लिखोगे ना, GS पेपर 1 जो है दिस इज अबाउट सोसाइटी, कल्चर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. सो ये एंगल आपके आंसर में आने चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन GS पेपर 1. GS पेपर 2 you need to have a political angle, governance angle, international relation angle.